फ्रॉम ड्रैप टू फैब आपने सुना बहुत होगा, बट आज मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी, और वो भी सिर्फ 24 घंटे में। हेलो एंड वेलकम टू द बिग बास्केट यूट्यूब चैनल। ये कंडीशन है मेरे न्यू बेडरूम की, जहाँ मैंने आज ही शिफ्ट किया है, एंड आई जस्ट हैव 24 आवर्स टू ट्रांसफॉर्म दिस अनप्लेजेंट व्यू into a pleasant, cozy sight. And while I do that, don't forget to check out today's giveaway challenge for a chance to win an exciting voucher from Big Basket. So, let's dive into the grind. Usually when we see a heap of junk, the first thought that comes to mind is where to begin. In my experience, the first step is always to gather the junk together. बिना सोचे समझे एक डस्टबिन बैग लीजिए और डीक्लटरिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे मेस कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका किसी भी जगह को क्लीन करने का मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा। क्लीनिंग अ डर्टी, फिल्दी स्पेस isn't very exciting, I know, and this is a major reason why we procrastinate or hesitate to get started in the first place. पर क्या आप जानते हैं कि इस सफाई के पीछे का रियल मोटिवेशन क्या है? द फोरसाइट ऑफ अ ब्यूटिफुल कोजी स्पेस दैट आई कैन कम बैक टू आफ्टर अ टायरिंग डे। तो बस क्लीनिंग कैसे होगी, कब होगी के एक्स्ट्रा थॉट्स को करे बंद, सिर्फ क्लीनिंग के मिनी स्टेप्स को फॉलो करते जाएं एंड द प्लेस विल लुक टाइडी इन नो टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है टू एक्चुअली गेट स्टार्टेड। मैं सुबह से बेडरूम क्लीनिंग को टाल रही थी बिकॉज आई न्यू इट वॉज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट देन आई हैड एन आइडिया। आई थॉट अबाउट मेकिंग द क्लीनिंग एक्साइटिंग बाय टर्निंग इट इनटू अ चैलेंज एंड रिकॉर्डिंग द प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे लगा जब करना ही है तो क्यों ना थोड़ा फन ऐड किया जाए टू लाइटन अप द मूड। बस फिर क्या, चैलेंज स्टार्ट होते ही आई गॉट अ ग्रेट पुश एंड एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा काम है जिसे करने से आप झिझक रहे हैं, ट्राई मेकिंग दैट जॉब अ लिटिल फन एंड देन यू विल सी हाउ क्विकली दैट टास्क विल बी डन। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा आइटम्स फ्रॉम द रूम दैट डिडंट बिलोंग देयर एंड रिटर्न देम टू देयर प्रॉपर प्लेसेस। जैसे जैसे जगह से सामान कम होता जाता है, क्लीनिंग बर्डन भी अपने आप कम हो जाता है। इट टुक मी अराउंड 2 hours टू सॉर्ट, डीक्लटर एंड मेक स्पेस इन द रूम। जब वो हो गया तब लगा मंजिल अब दूर नहीं। नाउ दैट देयर वाज इनफ स्पेस इन द रूम, आई स्टार्टेड क्लीनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर। आई फाइंड क्लीनिंग टू बी वेरी थेरेप्यूटिक। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो आप शायद जानते नहीं कि क्लीनिंग के हर स्टेप पे हमारे माइंड को अलग अलग लेवल्स के सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज दैट सिंस क्लीनिंग टेक टाइम, दिस encourages our mind to slow down and calms us in overwhelming situations. Second, as we declutter, it opens up our mind और इससे किसी भी तरह का एडिशनल स्ट्रेस भी कम होता है। थर्ड बेनिफिट इज कि अब क्लीनिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज भी हो रही है, तो बस आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और मूड भी अच्छा कर देते हैं। एंड लास्टली, क्लीनिंग के फाइनल रिजल्ट से हमारे ब्रेन को एक स्ट्रक्चर मिलता है जिससे कि काफी पीसफुल फील होता है। तो हो गई ना क्लीनिंग थेरेप्यूटिक, और देखिए बातों ही बातों में पूरा रूम भी साफ हो गया। टू फील completely satisfied, I'll also vacuum a few areas to remove the remaining dust, especially in the nooks and corners of the room. It does take extra time, but it's worth the effort. इन सब में रात कब हो गई पता ही नहीं चला. So the last thing for the day was putting the curtains up before calling it a day and saying good night. Half the job is done and I'll start on the remaining half in the morning. Day 1 was very demanding, but today I woke up excited because today was going to be a fun day. I started day 2 by moving the furniture needed for the room and then I worked on the furnishings. बेड हमारे रूम का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और एक सुंदर बेडिंग अपने आप में एक डेकोर एलिमेंट बन जाता है. तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना बेड बनाया
और साथ ही दूसरे फर्नीचर पे कवर्स और रनर्स भी लगा दिए। One thing leads to another. With the basics done, I now turn my attention to the final element of this transformation, the decor. एक एक करके मैंने decor pieces लगाने शुरू किए and slowly the room began to take shape. The important aspect of decor is that the place stays clean for longer. Because let's accept it, it takes a big heart to mess up a beautifully arranged space. So even if it's simple, try adding your personal touch to that space and decorating that area. Now here is the giveaway question you all have been waiting for. What is the first step in cleaning a messy space? Write your answers in the comments below and don't forget to subscribe to the Big Basket YouTube channel to meet the basic eligibility. And with that, here is the final reveal, complete with before and after scenes. What do you think? Did I pass the challenge? Share your thoughts with me in the comments along with your giveaway answer. If you enjoyed watching, please like this video and share it with your friends and family. And don't forget to subscribe to the Big Basket YouTube channel for more helpful videos. I'll see you soon in the next video.